Hello students, good morning. So we are back today with chapter 7 which is national income. अब ये जो national income chapter है इसमें it is going to be very important because if you have seen the board weightage, all the chapters in which national income has got the weightage of around 8 marks compulsory and with option उसमें है 12 marks. कंपल्सरी 8 मार्क का आने वाला है और विद ऑप्शन 12 मार्क्स का आने वाला है. सो नेशनल इनकम इज गोइंग टू बी वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, राइट? चलो, सो लेट अस स्टडी व्हाट इज नेशनल इनकम. सो कैन आई से इनकम, ये तो सभी को पता है, इनकम, यील्ड, रिटर्न्स, राइट? व्हेन आई टॉक अबाउट नेशनल, क्या मैं मेरे और तेरे इनकम की बात कर रही हूँ? एम आई टॉकिंग अबाउट योर फैमिलीज इनकम? एम आई टॉकिंग अबाउट योर सिटीज इनकम? एम आई टॉकिंग अबाउट अवर स्टेट की इनकम? नो 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 स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट देश की इनकम. We say देश, we say country, but we never say it's country's income. We always say it's nation's income, national income. कभी सोचा है क्यों हम country's income क्यों नहीं बोलते, हम national income क्यों बोलते हैं? Very simple. Country is a physical territory. फिजिकल टेरिटरी बच्चों, क्या ये फिजिकल टेरिटरी कमाता है? नहीं. कैन आई से ये फिजिकल टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है, जब हम फिजिकल टेरिटरी के साथ हमारे पॉपुलेशन को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक नेशन. और जब हम ये नेशन की बात करेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ नेशनल इनकम, बिकॉज ये फिजिकल टेरिटरी नहीं कमा रहा है, ये कमा रहे हैं अंदर के लोग, ये कमा रहा है हमारा पॉपुलेशन. सो देयरफॉर वी से इट एज नेशनल इनकम, राइट? Chalo, moving ahead with the introduction part. So as I said, national income will consider all the aspects with respect to goods, services produced in an economy during a particular financial year. जो हम बात करते हैं, जैसे मोदी जी comes to the news channel, या वो बोलते हैं मेरे देश की इनकम है 10 किलो बटाटा, 5 किलो टमाटर, 2 लीटर दूध. No, no, no. He expresses the national income, he expresses the GDP, the GNP, the NDP, NNP at monetary value, at the money value, right? So it is always expressed in the money value. It is always calculated for one financial year, which starts from 1st April and it ends on 31st March, right? Chalo, moving ahead with, then we have the basic meaning of it over here. So national income, it is considering overall flow of goods and services produced in an economy which is during a particular financial year, right? So there are definitions given over here. You might have heard about many definitions जो हम लोग हर chapter में बात करते आ रहे हैं कि 2, 3, कभी 5 definitions होते हैं, but of course it is very important that we study the most important definition given by the economists, given by the committees. So here we have the most important definition which is given by National Income Committee, which was contributed by Mahalanobis, Rao and Gadgil. And the definition says, national estimate, a national income measures the volume of commodities, that is goods, tangible and services turned out during a given period. That is, period kaun sa hai ye? One financial year. Counted without duplication. That's the most important part. Duplication hona nahi chahiye, otherwise national income will be seen as overestimated. So we have to make sure that the national income is done without any duplication. How we can do it? We will see that in the chapter further. There's Pigou definition, there's Fisher. So as I said, you have to study the most important definition which is given by National Income Committee. Chalo, here comes a very first question, which is features of national income. So features of national income, it is a 4-marker question. As you can see, all the features over here. Here comes in detail. So the very first feature is macroeconomic concept. So when we speak about the macroeconomic concept, भाइयों और बहनों, ये मेरी और तेरी इनकम की बात नहीं हो रही है. We are talking about nation's income and therefore it's a macroeconomic concept because यहाँ पे जो macro का A है, ये जो macro का A है, ये A रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, समेशन, एंड देयरफॉर इट इज मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. सो नेशनल इनकम, इट रिप्रेजेंट्स द इनकम ऑफ द कंट्री एज अ होल रादर देन एनी इंडिविजुअल. सो मैं महाराष्ट्र के इनकम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंडिया की इनकम की बात कर रही हूँ, एंड देयरफॉर इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, राइट स्टूडेंट्स? सो द सेकंड हेड पॉइंट इज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. वी आर एम्फसाइजिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज फाइनल, फिनिश प्रोडक्ट. हमने डेफिनेशन में देखा था, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, हियर कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक बेंच है, ये बेंच को बनने के लिए लकड़ा लगा, वुड लगा, नेल्स लगे, कारपेंटर लगा,
finishing, sunmica, so many things required, right? All these are the raw materials required for converting our raw material into finished product, which is a bench, right? Students, अगर मैंने bench का value मेरे देश के income में add कर दिया है, तो आपको क्या लगता है, ये wood का, ये nail का, ये carpenter की value मुझे वापस देश के income में add करनी चाहिए क्या? Of course नहीं करनी चाहिए, otherwise that will lead to double counting, and therefore हम ये point की नाम बात कर रहे हैं that it is value of only finished goods and services, raw materials का value लेने का नहीं, intermediate goods का value लेने का नहीं, direct product को कितने में बेचा, कस्टमर को कितने में मिला, only that needs to be added in the national income, and therefore it considers only value of final goods and services, right? Chalo, next is net aggregate value. Students, I hope you remember, for this I can connect you all with the accounts वाला part. याद कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आप उसे कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में करते हो या पीएनएल में करते हो, दैट इज कैरी फॉरवर्डेड टू पीएनएल. आपने लिखा वहां पे पीएनएल में ट्रांसफर किया, वहां पे एग्जांपल लिखा आपने मशीनरी, लेस आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन. फिर आपको मिलता है एक नेट प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट से आपको मिला नेट प्रॉफिट. अब ये नेट प्रॉफिट कहां लेके जाते हो आप, आपके बैलेंस शीट में. देयरफॉर कैन आई से इन द बैलेंस शीट व्हेन वी आर कैरिंग डाउन आवर प्रॉफिट, इट इज नेवर द ग्रॉस वन, इट इज ऑलवेज द नेट वन. और नेट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने डिडक्ट क्या किया था, depreciation. So to find out the net aggregate value, we must always deduct depreciation. Yes, then here comes the next point, that is net income from abroad. Students, India is no more a closed economy. India is an open economy, students. Open economy का मतलब होता है हमारे goods बाहर जाते हैं, बाहर के goods हमारे देश में आते हैं, right? अगर हम बाहर के goods हमारे देश में लेकर आते हैं तो हमें उन्हें पेमेंट देना पड़ता है, हमारे goods बाहर जाते हैं तो हमें रिसीट्स मिलते हैं, हमें कुछ पैसे मिलते हैं. बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, देश के अंदर गुड्स बना, बिका, सर्विस रेंडर हुआ, ये सब तो देश की इनकम में ऐड होने ही वाले. बट बीइंग इंडिया अ ओपन इकोनॉमी, वी आर आल्सो कंसीडरिंग द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हिच इज एक्स माइनस एम, जो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स करेंगे तो पैसा आएगा, रिसीट्स. इंपोर्ट करेंगे तो पैसा जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज पेमेंट. सो एक्स माइनस पी कैन बी रिप्रेजेंटेड, आर माइनस पी कैन बी रिप्रेजेंटेड, x minus m can be represented, and r minus p would be represented, right? Here comes the next point, which is a financial year. As we already discussed, India is considering a financial year for national income calculation, which is from 1st April till 31st March. So then here comes the next important point, that is flow concept. So national income is flow of goods and services. Flow of goods and services is going to be the next question whole in detail, which is going to be a 4 marks. So पूरा हम flow concept in detail में पढ़ेंगे, जैसे household business को क्या provide करता है, business household को क्या provide करता है, in returns में क्या मिलता है, that is going to be in detail. In the features part, you are just going to explain in few lines. Then here comes the next point, which is money value. So national income is expressed in the monetary value, right? Chalo. Here comes the next question, which is circular flow of national income. This is a 4 mark question, students. और circular flow of national income की बात करेंगे तो यहाँ पे flow of goods and services होने वाला है, यहाँ पे flow of money होने वाला है. national income से देश चलता कैसे है, national income generate होती है, as we say one person's expenditure is another person's income, right? So हम लोग ये कैसे relate करते हैं, the day people stop spending, the day economy will also stop, right? So it is very important. जैसे if we talk about other country like example Japan, वहाँ पे -2 rate of interest चलता है. क्यों? अरे वहाँ पे पैसे बचाने नहीं है, पैसे हाथों का मेल है, इसे उड़ाना है, ऐसे कहते हैं. Because if we go to the bank and if we deposit money, then over there they do not give you rate of interest. You have to pay them the rate of interest because they are caretaker of your money, they are the custodian of your money, and therefore they invest it in other nation. Therefore our startups get so much of capital, right? Because उनके देश में तो उन्हें पता है कि उनको कोई returns मिलने नहीं वाले हैं, चलो ना लगा लेते हैं पैसा. I hope you are getting it. So here you can see that there is going to be the circular flow of national income, where we are going to consider 2 important parameters, 2 important points. So here we are talking about 2 sector economy, where we consider household and business, which is C plus I. C is nothing but the consumption, जो हम household की बात करें, और business से related हो गया investment. When we talk about the 3 sector economy, it is business, household and government. So C plus I plus G, where G will represent the government sector. And then the 4 sector economy, where we have business, household, government and the foreign trade, जो हमने अभी पढ़ा, net income from abroad. So you can see in the formula, C consumption, I investment, G government, plus bracket में X minus M, which is net income from abroad.
exports minus imports. Yes, so here comes the circular flow of national income. Students, kindly emphasize, here we have the household sector. हम सब घर household sector, हम सभी लोग belong करते हैं household sector को. Here we have the firms, which is a business sector, right? So can I say household sector is providing the factors of production to the business sector, which is land, labor, capital and entrepreneur. किसको प्रोवाइड किया? बिजनेस को. बिजनेस क्या करेगा? इसका गरबा खेलेगा क्या? नहीं. क्या करेगा? इसका प्रोडक्शन करेगा. चलो, इससे प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, ये किसको प्रोवाइड करेगा? इन रिटर्न टू दी हाउसहोल्ड सेक्टर, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड सेक्टर उसे डिमांड करने वाला है. क्या ये ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नहीं. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर का भी उसको रिटर्न्स देना है, और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो वी हैव टू गिव बैक द रिटर्न. सो जब हाउसहोल्ड ने बिजनेस को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया, बिजनेस ने हाउसहोल्ड को इन रिटर्न में फैक्टर पेमेंट दिया, विच इज लैंड को रेंट दिया, लेबर को वेजेस दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिला, कैपिटल को इंटरेस्ट दिया. चलो, ये हो गया फैक्टर पेमेंट्स की बात. जब बिजनेस ने हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दिया, तो हाउसहोल्ड ने बिजनेस को रिटर्न में क्या पे किया? कैन आई से दे हैव पेड व्हाट? दे हैव पेड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जैसे हम जो खर्चा करते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, वाईफाई, मोबाइल फोन, शॉपिंग, इंटरनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो खर्चे हैं वो हम बिजनेस सेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं, पे करते हैं. सो व्हेन वी बाय गुड्स वी पे, व्हेन वी रेंडर द सर्विसेज वी पे. दैट इज नथिंग बट आवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. So can I say this is a continuous process? This is a circular flow of national income in which sector economy, students? Two sector economy, because we have considered only household and business. So as we discussed over here, land, labor, capital, entrepreneur, flow of goods and services, factor payments, and in return consumption of goods and services. Can I say outer circuit जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं है, यहाँ पे सब physical goods and services की बात हो रही है. So therefore the outer circuit is called as a real flow. Can I say inner circuit में हम बात कर रहे हैं पैसे की, रेंट की, लेबर की, वेजेस की, कैपिटल के इंटरेस्ट की, एंटरप्रेन्योर के प्रॉफिट्स की, हमारे खर्चे की, चाहे वो खर्चा आप कैश में पे करो या कार्ड से पे करो या ऑनलाइन पे करो, बट पैसे की बात हो रही है ना. Therefore the inner circuit is called as the money flow. So the outer circuit is called as a real flow and the inner circuit is called as a money flow. Students understand, ये जो outer और inner का मैंने नाम बताया, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में नहीं है. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, when you do something extraordinary you get extraordinary marks. तो मैम मुझे क्या 4 में से 5 मार्क्स मिलने वाले? ऑफ कोर्स नहीं स्टूडेंट्स, बट देयर इज अ चांस दैट यू कैन गेट फुल 4 on 4 मार्क्स when you do this extraordinary चीज. बिकॉज हर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ने ये सेम डायग्राम बनाया रहेगा. तो तुझे क्यों टॉपर बना है? तूने क्या ऐसा एक्स्ट्रा किया है? तो जो एक्स्ट्रा किया है वो अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? सो यू कैन मेंशन इट ओवर हियर, आउटर सर्किट रियल फ्लो एंड इनर सर्किट एज अ मनी फ्लो. Coming to the next question, which is different concepts of national income. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 important concepts की, which is important for definition 2 marks, which is important for distinguish. ये पूरा question एक साथ कभी नहीं पूछा जाता है. It will either come for 2 marks definition or 2 marks distinguish. So what is the question all about? It emphasizes on 4 important concepts like GDP, gross domestic product, GNP, gross national product, NDP, net domestic product, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट. तो ये 4 चीजें हैं, ग्रॉस, नेट, नेशनल, इन्हीं के ऊपर इनके कुछ फॉर्मूलेज है. सो इट विल बी आस्क्ड इन डिस्टिंग्विश और इन डेफिनेशन. कम ऑन, मूविंग टू द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हिच इज जीडीपी. कैन आई से जीडीपी इज अ वेरी बेसिक क्राइटेरिया वेयर वी कंसीडर द बेसिक थिंग्स लाइक इंडिया बीइंग एन ओपन इकोनॉमी. सो वी आर कंसीडरिंग व्हाट? वी आर कंसीडरिंग C+I+G+X-M, जो हमने अभी पढ़ा था. कंजम्पशन, investment, government plus exports minus imports. So you can see it over here. So this is a normal GDP one, gross domestic product. Coming to the next, which is net domestic product. Students understand, gross के बदले word आ गया net. जब हम gross से net पे जाते हैं, याद कीजिए बैलेंस शीट, याद कीजिए P&L, याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट. तो हमने क्या किया था? gross से net आने के लिए हमने माइनस डेप्रीसिएशन किया था. करेक्ट स्टूडेंट्स? सो आप देख सकते हो, वी हैव डन जीडीपी, द एक्चुअल फॉर्मूला माइनस depreciation. Students, if we elaborate the formula of GDP, I hope you remember. Come on, repeat with me. C+I+G+X minus M minus depreciation. Clear students?
चलो देन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट विच इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो कहने से पहला ग्रॉस डोमेस्टिक था, अब ये डोमेस्टिक से हो गया नेशनल. जब हम ये नेशनल की बात करेंगे तो कहने से इंडिया इज कंसीडरिंग द नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो याद कीजिए एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट जब हम करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे तो रिसीट्स मिलेगा, इंपोर्ट करेंगे तो पेमेंट जाएगा. सो कहने से R minus P. So you can see it over here, C plus I plus G plus X minus M. This is nothing but your GDP. So मैं यहाँ पे GDP भी लिख सकती हूँ. तो अनकॉमन क्या बचा? प्लस R minus P. Receipts minus payments. Very good students. Come on, moving to the last part, last concept which is net national product, which is the most updated one. नेट भी आ गया मतलब डेप्री भी आने वाला है, नेशनल भी आ गया मतलब R minus P भी आने वाला है. मतलब वी हैव टू कंपाइल ऑल द फर्स्ट 3 formulas over here, right? Come on now students, repeat with me. अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूंगी तो कहना है इसे इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी C plus I plus G plus X minus M प्लस R minus P माइनस डेप्रीसिएशन. अगर मुझे इसे शॉर्टकट में बताना है तो मैं लिख सकती हूँ GNP माइनस डेप्रीसिएशन. I hope it's clear students.